Mic টা খুলো। Hello, dear friends. Today, okay, welcome to our own classes. Today we'll start GS paper 3, GS paper 3 economics. GS paper 3 economics. Just before this class, in the last class, we have discussed about the syllabus of economics, the importance of the paper, and we found that around 60 to 90 marks, 60 to 90 marks are coming from this economics part. Fine. Syllabus बहुत छोटो अछि यार. We will try to complete the syllabus by 15 to 18 classes. छोटो syllabus अछि ताकि हम जल्दी complete करिया. But this is very much important. You should know the strategy and how to read it. Fine. केवल syllabus को देखिए पढ़ले हबनी. मुझे लास्ट टाइम भी कही वी नीड टू एनालाइज द PYQ. आमको जितेबाला भी सिलेबस देखुंती पढ़ाई जो बसवा सिलेबस सहित आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा ताहले आम जापर कौ एरिया रु अधिक क्वेश्चन आम प्रायोरिटी वाइज आम कंप्लीट करवा. ओके, सो व्हाट वी विल डू इन दिस क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व सम ऑफ योर बेसिक डाउट्स, or we can say we will build the basics. Actually Indian economy रो basics बहुत vast अछि, सब तो आम ये कंप्लीट करि परिबा नै. जो जो पार्ट रो बेसिक हमको ये दरकार हो तार बेसिक आम पढ़िबा. Then we will analyze the PYQ and syllabus, and to make it more effective, what we have do, we will study it again in the question and answer format. We will study it in question and answer format, so that whenever you will go to the examination hall, you are completely ready and just read the question paper and write the answer. Economic रे or economics रे जेतले हमें आंसर लिखुचंदी, data plays a very important role. Data plays an important role. Data को हमको ठीक रे लिखवार अछि. को data? There are various types of data are there. Fine. Starting from the budget, we have different schemes like schemes for women empowerment, scheme for agricultural development, scheme for development or increasing the farmer income by or doubling the income of farmer,
Then there is data about the education, data about the health sector. Every data we must know, and we have to put it in the mains answer paper so that we can secure a good score. If we are only writing the concept without putting any evidence or without putting any data, then the marks that we will secure will be very less. The average mark will be secure and it is not going to help you in any way. Fine. So in every question, we will try to put as many data as possible. It is not like that we will put every data. The data that is required, we will put. And the best way is that we must practice a data set. The basic data set for women empowerment, for agriculture, for health, and we need to apply it at various papers. गोटे डाटा पेपर 1 रे भी यूज हो पारिबो, पेपर 2 रे भी यूज हो पारिबो, पेपर 3 रे भी यूज हो पारिबो। आउ आमे हमको एमती डाटा प्रिपेयर करबा पड़िबो जोटा हमें गोटे डाटा को हमें तीनटा पेपर रे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर परिबा। पचरा रे हम काई लिखिबा, जदि पचरा रे जाई आ हम जानि जंदी ताले हम ताकू केमती इफेक्टिवली लिखि आसीबा तापरे हम डिस्कशन करिबा। फाइन। So we'll start with the first topic of today, that is budget 2025. Our syllabus अच्छी तीटा जिनस अच्छी budget of India and budget of Odisha. Today we will study the budget of India, and whenever we will study specifically economics for Odisha, there we will discuss about the budget of Odisha. Last year ru jodi apne question dekhibe, there are questions directly coming from the Odisha budget. Odisha budget ro gote scheme thila na, Odisha budget ro scheme thila about the roadway development, and there is a direct question from this budget only. तो हमको budget economic survey तार जहाँ भी important data, जहाँ भी important figures अच्छी ताको मन रखिया पड़िबो, and we need to write it कारण question तादर आसुची. Okay, we'll start with the budget of India. First of all, what is budget? Budget कौन? Budget हम सब बाटे करचंदी, घरे भी हम गोटे budget करचंदी, ऐसा न घरे भी हम गोटे budget करचंदी, home budget. जितना हम गोटे सांगवान सहित मिसी की गोटे पिकनिक पार्टी करचंदी कि कॉलेज रे किछ गोटे फंक्शन करचंदी, then also we prepare a budget. College picnic party or for any activity जो थरे पैसा involvement अच्छी, we need to create a budget. So budget is a rough estimate. Budget is a rough estimate of expenditure and income. हमर केते इनकम अछि, को ग्राउंड रो हमर इनकम जनरेट होउची, आ को ग्राउंड रे हमें से इनकम को खर्च करिबा in a rough way, that is your budget. Let's suppose हमें गोटे budget तैयारी करले for our college annual function. Fine. For our annual function we create a budget. We have certain money in hand. Okay, let's suppose that we call as income. ताले college function पे पैसा कोट कोट आसीबो. First one is college management. College management will give you money. Second one is sponsorship, and third one is if the college wants to collect some money from the students. Okay, these are the income for the annual function. So let's suppose the college gathers around 5 lakh rupees for the annual function.
छोट कॉलेज 5 लाख टका इनकम माने 5 लाख टका से बजेट अलोकेट कले, so that within that 5 lakhs you need to do the function. Okay, gote din function achi 5 lakh rupees in hand. Now you have to plan to make the function a grand success within that 5 lakh rupees. तो आदर कौन खर्च हो परिबो? खर्च हो परिबो, let's suppose you need some money for stage. Let's suppose this stage will cost you 50,000. Then for lighting of the stage, let's suppose another 50,000. Then for guest, it is around 10,000. Guest one aswe tang khaya piwa tangar kharcha. Let for food of students, you are spending 1 lakh rupees. तुमर कहियर कोन माने हला बजेट रे सब बळे दीटा पार्ट रहइबो, गोटे रहइबो इनकम पार्ट, गोटे रहइबो एक्सपेंडिचर पार्ट. किछि हमको इनकम होबो ताको हमें बजेट रे पके कि हमें देखिबा केते पैसा हम बार अछि, ताको हमें किमिति प्लान करले प्रॉपर्ली हमें ताको यूटिलाइज करि परिबा, मैक्सिमम काम हमर हेइ परिबो. जदि हमें जान नथि हम बार केते बजेट अछि, लेट्स सपोज हमें सब एमति कर देले, कला पर हमें देखले कि हमर खर्च होला 5 लाख रुपीस, बट कॉलेज कहबो नाही मु तो तुमको 2 लाख टका ही देइ परिबी. सेतल कोन होबो ताले? सो ऑब्वियसली जेतल हमें गोटे कॉलेज रो छोटो फंक्शन विषय हम कथा होउचंदी, सेतबेले भी हमको बजेट दरकार. जेतल हमें देश कंट्री लाइक इंडिया व्हिच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सेठी जेतल हमें पैसा को लोकंटू माने पैसा हमर इनकम होउची ताको हमें डिफरेंट स्कीम रे खर्च करचंदी, तो ऑब्वियसली नीड ए बजेट. ओके, व्हाट इज बजेट? हम कहले कि बजेट इज एन रफ एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंट्री विदिन ए गिवन टाइम लिमिट फॉर 1 ईयर. 1 ईयर स्पेसिफिक टाइम लिमिट भीतर हमको खर्च करिया पड़िबो, राइट? तो हम जे देखिबा बजेट रो बजेट, who is presenting the budget? It is presented by the finance minister. It is presented by the finance minister on behalf of President of India. On behalf of President of India, finance minister or finance minister introduce the budget in the parliament, right? It is comes under article 110. Article 110 रे हमरो बजेट विषय रे लिखा है. Fine. Article 110, finance minister on behalf of president. What a prelims question मन रखि परिबो, the maximum number of budget is presented by the first, I'm just giving you a hint, the first non-Congress PM, non-Congress PM, जे non-Congress to first time पे PM है country रो, he has the record of presenting maximum number of budget in the parliament, right? Find out who is he. तो हमें देखिए बर्तमान पार्ट ऑफ बजेट तो कितना पार्ट था, तो हमें देखले बजेट रो ताको हमें मोटा मोटी दी भाग रे डिवाइड कर परियो. वन इज योर एक्सपेंडिचर, और लेट्स सपोज फर्स्ट वन इज योर इनकम and second part is your expenditure. We can divide the income again into two parts. One is capital, one is revenue. Similarly, expenditure can be capital or revenue. We need to understand what do we mean by capital, what do we mean by revenue. Whenever there will be change in the asset, you can write it down. Whenever there will be change
in asset, that will be termed as capital. Okay, maybe income or capital expenditure. ଯେତେବେଳେ ତୁମ asset ରେ change ହେବ, let's suppose ମୁଁ କହିଲି capital ରେ ଆମେ expenditure ରେ ଆମେ capital ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, capital ଆମେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, capital ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, let's suppose ଆମେ country ପାଇଁ ଗୋଟେ infrastructure ତିଆରି କଲେ, let's suppose we have created an railway station, we created a railway station at Bhubaneswar. भुवनेश्वर ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ रेलवे स्टेशन क्रिएट करबा पे जहा खर्च करदिबा, that will be capital, माने से पैसा खर्च होला परे हमरो किछि गोटे asset तयारी होला, there will be change in asset. यदि asset रे change होउनी, then that comes under your revenue part. यदि asset रे किछि change होउनी, that will come under your revenue part. Then को खर्चटा एमिति अछि जोथरे हमरो खर्च तो होउची, but that is not changing in the asset. Okay, what are the expenses? Expenses like the salary, जो माने सरकारी कर्मचारी अछन ताको हमको सैलरी भी देबो पड़िबो, ऐसा नो एठी हम सैलरी देले, that is the expenditure, but there is no change in the asset. आ कोन कोन परिबो, we know that government takes huge amount of debts from other countries if we have shortage in income. जेतले हम पाखरे इनकम कम थिबो, गवर्नमेंट को बाहर पैसा नबाकू पड़े डेट हिसाब रे, तो जेतले हमें डेट हिसाब रे पैसा नबा तो हमको तार लोन रो इंटरेस्ट भी पे करिया पड़िबो. ओके, when you will pay the interest of the loan, that will comes under your revenue. कारण एठी तमर asset रे किछि चेंज होनी, आप माने वर्ष को वर्ष मास मास we need to pay the thing, जो रेंट आसीबो हमको ताको जो इंटरेस्ट आसीबो ताको हमें मास मास हमको पे करिया पड़िबो. ओके, जोथरे कैपिटल ले किछि चेंजेस, सॉरी asset रे किछि चेंजेस हो, that will be capital. Whenever there will be no change in asset, that will be termed as your revenue. Capital ले कोन चेंज हो, जदि हमें गोटे लोन नबा, if you are taking a loan, then that will be comes under your capital. कारण हम लोन, let's suppose हमें 50 lakhs रो लोन लेले, एटा हमरो कैपिटल हैला, जेतला हम त सूची दबा, that will also be capital. कारण एठी हमरो asset रो चेंज हैला, फाइन 50 लाख रुपीस हम आनले, asset रो हमरो चेंज हैला, 50 लाख देले, asset रे चेंज हैला, बट जो जिंस रिकरिंग होची, ज्यादा हमर asset से किछि लेना देना नाही, that comes under your revenue part. फाइन, तो हम देखियो वर्तमान फर्स्ट हम देखिबा इनकम पार्ट, तापर हम देखिबा एक्सपेंडिचर पार्ट. इनकम पार्ट रो कैपिटल ले कोन कोन आसीबो, इनकम पार्ट कैपिटल, you must know about the thing which is known as your disinvestment. Disinvestment, जेतला हम disinvestment करछन माने हम बारे गोटे कंपनी अछि, तार ओनरशिप को हम किछि परिमाण बिक दउचंदी, तो there is change in ownership, there is change in the asset, so तार जोटा will be your capital income. And what is revenue income? Revenue income means the tax, the service charge. टैक्स हम कोन थरे नबा कि, टैक्स थरे नबा ना, प्रति वर्ष गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करूची, प्रति वर्ष सरकार हमटो सर्विस चार्ज नउची, दैट कम्स अंडर द रेवेन्यू पार्ट. ओके, जस्ट मन रखिबो, जेतबेले गोटे जिंस रिकरिंग होतबो, प्रति वर्ष हमको दबाक पड़तबो, without the changing of asset or without changing the liability, then that will be termed as revenue. And whenever there will be change in the asset, जेमिति हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तयारी करले, तापे पैसा आनी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तयारी करले कि सेमति किछ करले, that will comes under the capital head. फाइन, तो रेवेन्यू दीटा पार्ट हम देखले, गोटे इनकम, गोटे एक्सपेंडिचर. इनकम रो दीटा पार्ट कैपिटल, रेवेन्यू. सिमिलरली एक्सपेंडिचर रो हम दीटा पार्ट देखले, कैपिटल एंड रेवेन्यू. Now we will understand types of budget. Types of budget. Budget रो कौन कौन टाइप अछि. First one is deficit budget. Deficit budget. Second one is excess budget. And the last one is balance budget. Balance budget. देखो, first one is deficit. Deficit माने कौन, जेतबेले हमर इनकम
is less than expenditure. Fine. Sorry, टाइप्स हम लिख ले तुम लिखि दउची टाइप्स हम लिख ले डेफिसिट एक्सेस एंड बैलेंस जितेबाला हमर कोन हो इनकम is less than expenditure, then that is termed as your deficit budget. इंडिया रे एबे पर्यंत हमर डेफिसिट बजेटिंग चलची जितेबाला हमर इनकम एक्सपेंडिचर टू कम होबो सेतेबाला हमकु डेफिसिट बजेट होबो माने हमको इनकम अछि 50 टंका हमको खर्च करे अछि 70 रुपीस तो ऑब्वियसली वी नीड टू टेक और वी नीड टू अरेंज दैट 20 रुपीस तो से 20 रुपीस हम कोट आनिबा वी विल टेक इट फ्रॉम द फॉरेन और द मार्केट ठीक अछि मार्केट रो किछि इंस्टीट्यूशन हम नै परिबा लाइक वर्ल्ड बैंक लाइक आईएमएफ तो सेटु हम लोन नै की डेट नै की हमकु फाइनेंस करिया पड़िबो हमर जा भी प्रोजेक्ट अछि दैट इज डेफिसिट व्हाट इज एक्सेस excess is whenever your income is more than your expenditure 70 rupees you have income but you have expenses of only 50 rupees so we have 20 rupees excess with us and balance is whenever the income is equal to expenditure that is termed as your balance budget okay ठीक है चिंता करो एबे को केस रे डेफिसिट बजेट भलो को केस रे एक्सेस बजेट भलो और को केस रे बैलेंस बजेट भलो देखो जेतला हमर इन्फ्लेशन बड़ी बड़ी जाउची ना जेतला हमर इन्फ्लेशन बड़ी बड़ी जाउची तो इन्फ्लेशन बढ़ले हमको कोन करे पड़िबो वी नीड टू कट द और कट डाउन द एक्सपेंडिचर हमको जेतबेले इन्फ्लेशन काई हुए इन्फ्लेशन सेतबेले हुए जेतबेले हम पारे कम कमोडिटी थाए और हम पारे एक्सेस मनी थाए हम पारे पैसा बहुत अछि लेट्स सपोज गोटे दिस पेन ओके दिस पेन इज 10 रुपीस तो 10 रुपीस लोक गले किनी कानले ए पेन रो जेतबेले डिमांड बढ़ी जीवो लेट्स सपोज ए पेन को 10 रुपीस लोक किनुथिले बर्तन लोक आसी कहे ना हम 15 रुपीस हेले भी चलिबो 20 रुपीस पर्यंत लोक दबा रेडी अछन तो ऑब्वियसली देयर विल बी इन्फ्लेशन कारण कोन हला पेन गोटे अछि हम त 10 टका बिकुथिले बर्तन जने आसी कोइ 15 टका देबी जने आसी कोइ 20 टका देबी तो ऑब्वियसली द कंपनी विल ट्राई टू मेक मोर प्रॉफिट सिमिलरली जेतबेले हम पाखरे कमोडिटी रो क्वांटिटी कम थिबो तार डिमांड अधिक थिबो सेतबेले कोन हेजियो सेतबेले इन्फ्लेशन हेजियो बिकॉज़ वी हैव एक्सेस मनी विथ अस एट दैट टाइम इट इज ए गुड प्रैक्टिस टू गो फॉर डेफिसिट और एक्सेस ठीक चिंता कलो एबेले जेतबेले हम पाखरे एक्सेस मनी अछि सेतबेले डिमांड पडुछि ना तो एटा हम कोन पे जिबा अधिक खर्च करिया ना कम खर्च करिया ऑब्वियसली वी विल गो फॉर लेस एक्सपेंडिचर दैट इज एक्सेस हम पाखरे 70 टका इनकम अछि बाकी हमें 70 टका खर्च करी न करी कि मार्केट को न छाडी कि पैसा हम पाखरे रखिबा जेतबेले इन्फ्लेशन अधिक थिबो जेतबेले इन्फ्लेशन कम थिबो सेतबेले कोन हबो सेतबेले डेफिसिट बजेटिंग विल बी प्रिफर्ड लाइक इन द टाइम ऑफ कोरोना पेन गोटे लोक 10 टका दे किनी परिबे बड लोक किनु नांदी तो सरकार कोन करला सरकार एमिति प्रोग्राम तयारी करिवे जा फल लोक माने बार पैसा आसीबो जेतबेले लोक माने पाखरे पैसा आसीबो दे विल अगेन बाय तो जेतबेले हमर इन्फ्लेशन माने जेतबेले डिमांड कम थिबो इन्फ्लेशन हो न थिबो ठीक अछि से माने इन्फ्लेशन हवा को मार्केट रे क्रिएट ही हो न थिबो डिमांड ही न थिबो मार्केट रे सेतबेले सरकार कोन करियो सरकार विल पुश मोर मनी इनटू द मार्केट एंड दैट टाइम डेफिसिट बजेट इज प्रिफर्ड ठीक अछि जेतबेले मार्केट रे पैसा दरकार सेतबेले डेफिसिट बजेट करा हबो लोन हमको नवा को पड़िबो अधिक लोन नै कि हमको खर्च करियो पड़िबो राइट and the third point is balance that is when your income and expenditure is same like us माने हमें जति की इनकम करछन सेति की खर्च कर देछन फिर नेक्स्ट मंथ को इनकम करछन नेक्स्ट मंथ को खर्च करछन ऐसा नो देयर मे बी सर्टेन पार्ट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट किछ पार्ट करछन किछ पार्ट खर्च करछन घर बडा अछि फाइन पेट्रोल खर्च अछि जा भी अछि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट रो भी इंडिया रे कोन चलछि इंडिया रे डेफिसिट बजेटिंग होछि एंड दे ट्राई टू मेक इट इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर कारण एक्सपेंडिचर जेतले करिया को अछि जेमनी मु कहली कि 70 रुपीस एक्सपेंडिचर हमर हबो डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स अछि
डिफरेंट प्रोग्राम्स अछि ताको तो बंद करि होबनी तो 70 रुपीस वी नीड टू एक्सपेंडिचर हमको 70 रुपीस दरकार मिलिटरी रो हमें काटि परिबानी हेल्थ बजट को हमें कम करि परिबा नहीं एजुकेशन में हमको पैसा खर्च करियार अछि वेलफेयर स्कीम्स जेमति बहुत सारा स्कीम्स अछि लाइक आईसीडीएस अंगनवाड़ी तापरे जो राशन वगैरह मिलुची राइट से सब जिनस हम तो कोडा भी बंद करि परिबानी तापरे आयुष्मान भारत योजना अछि राइट ए सब जिनस हम बंद करि परिबानी हमर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होची तापै भी पैसा दरकार सो व्हाट वी डू हमको ए सब बंद न करिके हम कोन करछन हम मार्केट रो पैसा नउछनी with a certain rate of interest and we are investing that money to create infrastructure in our country and to sustain the welfare schemes that is running in our country right so amaro budget deficit hochi but government kaun korchi government try to make income is equal to expenditure that you need to understand right तो हम देखियो बर्तन 2025 रे इंडिया रो बजट रो कोन थिला तार what is the situation of Indian budget during 2025 एटिका में आसीबा आगे में देखिबा ओके वी विल सी नाउ द डेफिसिट देखो लिखा है डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस हम कोन बुझले डेफिसिट फाइनेंसिंग रे जति कि हमरो इनकम अछि ता हमरो एक्सपेंडिचर अधिक अछि राइट सो नाउ सी दिस इज रेवेन्यू पार्ट एंड दिस पार्ट इज शोइंग द कैपिटल पार्ट कैपिटल ले कोन कहितली कैपिटल ले देयर विल बी चेंज इन एसेट and what about revenue there will be no change in asset but recurringly the amount will either it will be income or it will be expenditure but recurringly it is happening or it is periodically it is happening बर्षरे थरे मासरे थरे okay like the salary we are taking सरकार रे काम करचंदी हमकु दरमा मिलुची जो माने सरकारी चाकरी करचन जांगु दरमा मिलुची that is a recurring payment सेतिर तो किछि asset change होनी so that comes under the revenue part right तो रेवेन्यू पार्ट रे हमर इनकम केते थिला 34 लाख करोड़ एक्सपेंस थिला 39 लाख करोड़ ठीक अछि रेवेन्यू पार्ट रे हमकु 34 लाख कोटी टंका रो इनकम हेतिला आ 39 लाख करोड़ रो हमरो एक्सपेंस थिला माने देखो इटी ही हमरो इनकम टू एक्सपेंडिचर अधिक गवर्नमेंट एबे कोन करियो गवर्नमेंट विल ट्राई टू मेक इट द बैलेंस बजट फाइन तो कैपिटल पार्ट देखो कैपिटल ले हमर इनकम होची 16 लाख करोड़ and the expenses is 11 lakh crore 16 lakh crore रे हमर इनकम 11 lakh crore रे हमर एक्सपेंस नाउ यू कैन सी देखो इनकम को मिसाओ एबे इनकम एथिला 34 एथिला 16 so that will become 50 हमर इनकम हला 50 and what is expenditure हला 39 plus 11 सेटा भी 50 ओके एक्सपेंडिचर हमर दरकार थिला 50 गवर्नमेंट पाखरे इनकम थिला 34 तो गवर्नमेंट 16 करोड़ रो कोन गला गवर्नमेंट 16 करोड़ रो पैसा अरेंज कला सो दैट इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर सो दैट आवर बजट विल बिकम बैलेंस बजट फाइन देखो गोटे टर्म अछि बजट डेफिसिट माने आमे केते टंका खर्च करचंदी आ हम पारे केते टंका अछि केते टंका आमे खर्च करचंदी केते टंका हम पारे अछि लेट वी गो टू दैट सेम एग्जांपल ऑफ कॉलेज फंक्शन आमे कॉलेज फंक्शन रे प्रिंसिपल के रूम को गले प्रिंसिपल के रूम को जाई कहले सर वी हैव ए कलेक्शन ऑफ 4,50,000 till date and we have calculated that our expenses will be around 50 or 5 lakh ठीक है हमें कहले हमें 4,50,000 भलिया हमें अरेंज कर सलुनु बट आवर एक्सपेंसेस विल बी अराउंड 5 लाख तो हमकु आउ 50,000 रो फंड दरकार अछि दैट विल बी टर्म्ड एज योर बजट डेफिसिट बजट केते खर्च होबो 50 और सॉरी 5 लाख केते तम पाकर अछि 4,50,000 व्हाट इज द डिफरेंस 4,50,000 minus 5 lakh is equal to 50,000 which will be termed as your budget deficit that is total expenditure minus total revenue or total receipt of the government हमें कौन देखले हमर एक्सपेंडिचर केते थिला आउ हमर इनकम केते थिला देखो एक्सपेंडिचर केते हमर थिला 39 plus 11 तो हमर एक्सपेंडिचर हे गला 50 बट हमर इनकम केते अछि
income अच्छी 34. So 16 lakh crore is the budget deficit of this year. Budget deficit हम कितने देख ले? 16 lakh crore is the budget deficit of this year for the year 2024-25. Right? Now we'll see the next term, that is fiscal deficit. देखो fiscal deficit ର ମାନେ कौन? It is the difference between budget deficit and we need to exclude it the borrowing. ठीक अछि. बजेट हमर डेफिसिट केते थिला? हमर तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर हे गेला ना. जेतला हमें पैसा नै के आसले बोरो करके हम नै के आइले हमर 16 लाख करोड़ जेतला हमें हम केते होतला एक्सपेंडिचर होतला 50 तो हमें इनकम भी 50 कले. ओके, जोटा हम धार आनले दैट इज डिफरेंट, बट मिसेला पर हमर इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर होतला. तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो गेला 0. तादर हम कोन माइनस करे पड़िबो? वी नीड टू एक्सक्लूड द borrowing. हम केते टका बोरो आनथिले माने केते टका धार आनथिले मार्केट रु? दैट इज 15 लाख. ओके, 15 लाख crore हमें धार आनथिले. That 15 lakh crore will give you the fiscal deficit, that is 15 lakh crore. किछि के जगह रे minus 15 lakh crore लिखा हितिबो, किछि के जगह रे plus 15 lakh crore लिखा हितिबो. Depending upon the main से तो आपण 15 lakh crore ही लिखि के आसीबे, but जेतल prelims करतंदी you just see what is it given, whether it is given minus 15 lakh crore or it is given 15 lakh crore. Depending upon the answer you can choose. Fine. Then there is a fiscal deficit of 4.44. माने आमर जति की धार आनिचंदी that is 4.44 of GDP, माने 4.4% of GDP. ओके, केते हम धार आनिचंदी? हम कथले हम धार आनिचंदी बर्तन 15 lakh crore. This 15 lakh crore is 4.4% of our GDP. Now you can calculate our GDP. It will be around some 300 some crore, 300 some lakh crore. Fine. केते होबो हिसाब करियो. हमर बजेट रो जीडीपी रो डेफिसिट होचे हमर 4.4%. हम जति की पैसा आनी चंदी, that is the deficit to the GDP is 4.4%. Now come the next term, that is fiscal deficit is the difference between government total expenditure and its total receipt excluding borrowing. हम देखले एबे जोटा ऊपरटा total government रो, it is the difference between government total expenditure, okay, केते दिला total expenditure 50 and its total receipt माने income, that is also 50 रो minus कर दिला 50 0 excluding borrowing, 0 minus borrowing केते दिला 15 lakh crore. That 15 lakh crore will represent the fiscal deficit, which is 4.4% of GDP. Fiscal deficit is 4.4% of our GDP. Now we'll go to the next. देखो, now the next term, that is primary deficit. Primary deficit कौन अछि? It is the formula is fiscal deficit. I am just writing it here. Fiscal deficit minus interest on earlier loan. Okay, this is primary deficit. Primary deficit हमन कौन कहला formula? Primary deficit का formula है fiscal deficit minus interest on earlier loan. Fiscal deficit हम केते थिला? Fiscal deficit थिला हमर 15 लाख 15 लाख crore ऐसा नो. But जो 15 लाख crore थिला से जो 15 लाख crore आनले हमको तादर किछि अमाउंट हमको जो आगुरु लोन करिथिले तारो इंटरेस्ट भी तो हमको पे करे अछि ऐसा नो. तारो इंटरेस्ट हम केते पे करचंदी? तारो इंटरेस्ट हम पे करचंदी 12 लाख crore. हमें जति टंका आनी चंदी हमको एबे प्रति वर्ष 12 lakh crore we need to pay or we need to repay the interest, that is 12 lakh crore. So fiscal deficit minus interest on earlier loan, that will be 3 lakh crore, 3 lakh crore, which is nothing but your primary deficit. Okay, fiscal deficit बाहर कर देलो.
फिस्कल डेफिसिट रू लोन इंटरेस्ट केते पे करछो ताकू माइनस कर दबो ओके जहा रहला दैट विल बी योर प्राइमरी डेफिसिट fiscal deficit minus the amount that is paid as the interest of all your loans that will give you the formula for your primary deficit 15 lakh koti ro fiscal deficit minus 12 lakh crore ro interest payment that we need to do 15 minus 12 equal to 3 lakh crore is the primary deficit of our budget. Next term is revenue budget. Okay, revenue budget देखो revenue माने मु कौन कहली गोटे कहले capital गोटे कहली revenue. Okay, now see the revenue part of the budget. Revenue budget कौन कहूची we have an income of around कितना हम income अछि 30 lakh crore हम देखिए income रो source भी हम देखिए. Okay, our income is 34 lakh crore. Our expenditure or outgoing is 39 lakh crore. Okay, hetal ko 50 lakh crore thila 39 kim dela. That was the total. It is we are only talking about the revenue part. Okay, so the capital ko मैं मिसे thile 39 ने capital मिसे thile 11 that will become 50. एठी हमें capital part को मिसुनांती only we are talking about the revenue part. तो revenue केते हला एठी 34 रो income outgoing 39 तो 34 minus 39 is equal to 5 lakh crore, which is nothing but your revenue deficit. Okay, simple formula revenue part ro income revenue part ro expenditure income रो expenditure को minus कर देबो जहां भी तमरा असला that will be give you the revenue deficit. कौन ला formula revenue part को पळे आसीबो income रो expenditure को minus कर देबो जहां आसीबो that will give you the revenue deficit. केतना हमको revenue रे कम पड़छ that is revenue deficit. Next effective revenue deficit. अच्छा जति के हमर कम पड़ला तादुर हमें किछि पैसा स्टेट रो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें देचंदी हम केते कम पड़ला हम देखले हमको देखले 5 लाख करोड़ ओके एक्जेक्टली इट इज सम 5.23 लाख 5.23 लाख करोड़ हमरो रेवेन्यू डेफिसिट हैला बट तादुर हमें किछि पैसा स्टेट को भी तो देचंदी तांकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होवा पई वी नीड टू माइनस इट अगेन वी नीड टू माइनस द amount that is given to state for the creation of infrastructure. ठीक अछि let's suppose माने सेंटर ओडिसा को देला 20,000 crore for creation of मंडी गोटे मार्केट गोटे मंडी तैयार करिया पे सान किछि पैसा देले ओके कि गोटे जगह स्कूल तैयार करिया पे साने पैसा देले that will be minus from this revenue deficit. Okay, so effective revenue deficit formula is revenue deficit minus grants for capital asset in the state. केते हमर जाई छी कैपिटल एसेट को 4.27 लाख crore which is 0.96 lakh crore. Effective revenue deficit is 0.96 lakh crore. That you need to understand and that you need to remember for the exam. Okay, गोटे टर्म एटी मन रखियो एटा तो पढिबा हमें. There is a Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. 2003 रे during the Vajpayee government there was an act. कौन से act थिला? Fiscal Responsibility and Budget Management Act. कौन होतला? Central government और state government. Okay, union government और state government निज निजर budget बनांती. But before 2003 there was no such act. माने जो गवर्नमेंट जेते टंका चाहिबो मार्केट रो लोन उठेबो खर्च करिवो फॉर एनी वेलफेयर स्कीम फॉर एनीथिंग दे डोंट यूज देयर प्रूडेंस तांगो फाइनेंशियल प्रूडेंस यूज करिया नहीं फाइनेंशियल रिसोर्स को केमती ऑप्टिमल यूज करिया अछि से विषय चिंता करिया नहीं जहां तांकर दरकार हला खर्च करिया अछि व्हाट दे विल डू दे विल गो टू द इंटरनेशनल मार्केट दे विल टेक द डेट एंड दे विल do the expenditure. Okay, for many welfare schemes anything but जेतला हमें गोटे जगह रो लोन आनु चंदी we need to pay it. ठीक है हम देखले ना हमको एबे प्रति वर्ष 12 लाख कोटी टंका रो खाली हमको इंटरेस्ट देबा होछि
So you can imagine how much loan we have taken. So that is only for the union. Mo state kotha kohuni. That is only for the union. Union government ku प्रति वर्ष आमको 12 लाख कोटी टंका पे करिया पड़ची as the amount of interest that we have taken. जो लोन आम नहीं से लोन नो इंटरेस्ट हिसाब रे प्रति वर्ष 12 लाख कोटी टंका आमको देबो पड़ची. तामाने आगुरा में हेती पैसा नहीं चंदी. So before 2003 there was no such act, but during Bajpayee time, Bajpayee government, what they have decided that the fiscal deficit of the state and the union will be maximum 3% of GDP. हम कहते हैं कि हमारा कितना अच्छी fiscal deficit ए वर्ष अच्छी 4.4%. Okay, slightly above that 3% range. कहीं तार अधिक अच्छी because of the corona बेले हमें जो आनी थिले लोन वगैरह ताको हम पे करचंदी. हमारा इकोनॉमी बर्तमान स्ट्रेंथनिंग होची. Now we have become the 4th largest economy in the world. ठीक अछि. तो ताको सब मैनेज करिया पे we have taken some extra loan. So our fiscal deficit is at 4.4%. Obviously between 1 or 2 years it will be again come to this 3% cap. Okay, act नाम मन रखियो Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. The fiscal deficit must be remain between 3% of the GDP. Okay, जेतले freebies रो क्वेश्चन आसीबो, जेतले freebies रो क्वेश्चन हम अटेंड करथुवा, सेतले हमको ए पॉइंट लिखिया पड़िबो कि गवर्नमेंट freebies दोउची or government is doing welfare schemes. Okay, there is difference between welfare scheme, there is difference between freebies. Welfare schemes कोन गोटे या schools नहीं, right? गोटे या hospital नहीं, आमे सेठी hospital create कले, आमे सेठी school create कले, that is welfare schemes, कारण तार जरूरत अछि. But गोटे जगह रे आमे freebies केमती हे परियो, आमे मागणा साइकिल बांटी देले. Okay, without seeing the necessity, आमे इलेक्शन आमे कहितले आमे इलेक्शन जितले आमे साइकिल बांटी दबु, आमे इलेक्शन जिति गासु साइकिल बांटी देलु. आमे कहलु कि आमे इलेक्शन जितले लैपटॉप बांटीबु, आमे बांटी देलु. साउथ इंडिया रे सब जिंस बहुत आगुर होई सरची. इलेक्शन बेले से माने एमती वादा करंदी एंड दे डू इट आफ्टर द इलेक्शन. जितला पर जे कोनसी पार्टी आसीबो दे डू इट. केमती करथले से माने गोटे गवर्नमेंट कहला मु जितले ग्राइंडर बांटीबी. ग्राइंडर टा कोन गोटे वेलफेयर स्कीम हे परियो. That is a freebie to get the support of the voter. They do this. पैसा तो तांको दबाव पड़ने ना. They will take loan from the international market. जेतल सरकार चेंज हे जो नया सरकार आसीबो, ultimately the burden will be on the people. जेतल सरकार लोन रिपे करिवो कोठ आनियो पैसा. Obviously income tax की अलग जगह टैक्स नहीं की सरकार पे करिवो. Okay, that comes under your freebies. Okay, question already पचार सरची. So you need to understand the schemes, whether it will be freebie or whether it will be welfare. यदि welfare schemes करा होची, that is well and good, because हमारा constitution ही लिखा है जी to India to become a welfare state. आमा India welfare state हबो जो माने lower income group अछंती किमा माने जो community रो सेतिक डेवलपमेंट है नहीं, आमको तांको हेल्प करिया पड़िबो so that we will achieve a inclusive development. आम इकोनॉमी रे भी पढ़िबा the issues that is arising from the inclusive development. Inclusive development पाई what are the hindrances, कौन कौन असुविधा अछि जहाँ पे हमें inclusive development हमें अचीव करि पारनांती, and what are the schemes, सरकार कौन schemes करूचंदी so that we will make an inclusive development scheme. माने समस्त को नहीं कि हम डेवलपमेंट हवा एमती नहीं. जेतले हम गोटे स्कीम्स करिवा इंडिया डेवलप हबो, गोटे सेक्शन ऑफ पीपल विल बी डेवलप्ड, बाकी वन डेवलप हेबन सेमती तो नुहे. हमको समस्त को नहीं कि जीवा पड़िबो. जेतले हम समस्त को नहीं कि जीवा दैट विल बिकम एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट. फाइन. तो हमें एटा मन रखिबा फिस्कल रेस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट अनुसार फिस्कल डेफिसिट शुड बी 3% ऑफ जीडीपी एंड रेवेन्यू डेफिसिट विल बी 0% ऑफ जीडीपी. ओके, मन रखिबो आज का डेट रे हमर फिस्कल डेफिसिट अछि 4.4%. ओके, नाउ वी विल सी
some fact of this year budget. मन रखलो इनकम एक्सपेंडिचर ए सब जिंस दरकार होची एग्जाम रे हमकु कोट करिया पड़िबो हमकु आंसर लिखला बेले तक सब मेंशन करिया पड़िबो. Just 1 minute. Okay, now see budget 2025 रो revenue expenditure means जोटा हमें प्रति वर्ष सरकार दे दे चलछि. Okay, without the changing in the asset or liability, every year the money is being given or it is recurring every year. प्रति वर्ष रिकर होछि हमकु ताको दबाउ पड़छि. फाइन. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे फर्स्ट है सब्सिडी. मैं लिखि दउछि ठीक देखा उठु तो ठीक रे. Subsidy. Total subsidy this year is around 4.26 lakh crore. कितना हमें सब्सिडी दउछन ए वर्ष? Union budget is considering of giving 4.26 lakh crore of subsidy. कौन सब्सिडी अछि? फर्स्ट हला फूड सब्सिडी. फूड सब्सिडी कितना दिया होछि? 2.03 लाख crore. फूड सब्सिडी कोड दिया होछि. फूड सब्सिडी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जोटी हमर दुकान राशन दुकान सब अछि सेठी 5 केजी रो राइस फ्री दिया होछि. ऐसा नो राइस केजी फ्री. राइस केजी राइस और व्हीट व्हाटएवर सेटा आ कोन अछि बाकी जहाँ सब हमको सब्सिडाइज रेट रे मिलुची फूड से सब मिसेले केते होची 2.03 lakh crore around. Okay, according to our PM we give around 80 crore people free ration every month. प्रति मास out of 140 some crore, okay, we are giving around 80 crore people free ration. For that we need 2.03 lakh crore. Again for fertilizer, how much amount we are giving? 1.67 lakh crore. Okay, for fertilizer we are giving 1.67 lakh crore, and for petroleum that is 0.12 lakh crore. अच्छा petrol केमिन दिया होची? Petroleum also consists the gases. ऐसा नो जो गैस हमें यूज करचंदी द उज्ज्वला स्कीम फ्री जो सिलेंडर दिया होची सिलेंडर रे तांगु जो कैशबैक आछी. ओके, that is around 0.12 lakh crore. These three are the major subsidies that is given by government. और भी अच्छी सब्सिडी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मार्केट रे जहाँ भी रेट हो जदि गवर्नमेंट जति टका डिक्लेयर कला सेति टका रे गवर्नमेंट को किनिया को पड़ियो. लाइक दिस ईयर ओडिशा गवर्नमेंट has declared that they will procure rice at the rate of 3100 rupees per quintal. राइस क्विंटल 3100 rupees से साने किनले जेतोल की प्रिवेलिंग मार्केट कॉस्ट अराउंड 2100 और समथिंग. गोटे वर्ष 2 वर्ष पर्यंत लास्ट 1 year 2 year पर्यंत 2100 2200 सेमती रेट थिला. This year the MSP is declared at 3100 per quintal. Okay, some money is given by center, some money is given by the state, but finally that is the procurement price. Okay, तो हम देखले सब्सिडी देखले तापर देखबा इंटरेस्ट ऑन लोन्स. ओके, इंटरेस्ट ऑन पास्ट लोन्स केतना हम दउचंदी? इंटरेस्ट ऑन पास्ट लोन हम देखले 12 लाख कोटी देखले ना. हम जस्ट हमें लास्ट स्लाइड रे देखथिले 16 लाख ना 15 लाख टका डेफिसिट रु 12 लाख कोटी हमें पे करचंदी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द लोन दैट वी हैव टेकन प्रीवियसली. आगर जो हमें लोन नहीं तापे हमें 12 लाख कोटी टंकार इंटरेस्ट दउचंदी. सब्सिडी हमें देखले 4 लाख करोड़ एंड पेंशन केते 2.76 लाख करोड़. 2.76 लाख करोड़ 2 लाख 2.2 कोटी 76 लाख टका 2.76 लाख करोड़ मनी
is used for the pension. Pension is a social security scheme. Yes or no? Pension is a social security scheme. Social security scheme for the person who has invested their time for the service of government after 6 years of or after 60 years when they will retire, government will pay them half of the last drawn salary they have taken from the government. ଯଦି ଜଣେ ସରକାର ବାହାରେ ଚାକିରି କଲେ, okay, obviously certain time ବି ଆମକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡିବ, 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହବନି। ଆପଣ ଯଦି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବେ, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଡ୍ରନ୍ ଯେତିକି salary ଥିବ ତାର 50% ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ pension ହିସାବରେ ଦେବେ, and whenever there will be change in the whenever there will be change in the salary, then also change in the pension. ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର DA ବଢିଲେ ସାଲାରୀରେ DA ବଢିବ, ପେନସନରେ DA ବଢିବ, ଯେତେବେଳେ ପେ କମିଶନ ଆସିବ ତାଙ୍କର ବଢିବ, obviously ଏଠି ବି ବଢିବ, ପେନସନ ବି ବଢିବ। ଫାଇନ୍। ତ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି, ଏବେ ଆମର ଅଛି MSP ଅଛି, ସରି ଆମର ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସ୍କିମ୍। ଓକେ, ଆଗରୁ ଥିଲା ଓଲ୍ଡ ପେନସନ ସ୍କିମ୍, ତାପରେ ଆସିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସ୍କିମ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସ୍କିମ୍ ରେ କ'ଣ କରାହଉଛି, old pension scheme re je bhi the service holder doesn't have to give any amount of money to the government. सरकार को किछि भी पैसा देबा पड़ नथला, सरकार निजे तरफ रु ता रिटायरमेंट पर पैसा दउथिले। बट एनपीएस अंडर रे कोन हला, एनपीएस अंडर रे एमती करा गला कि जे चाकरी करिवो तार सैलरी रे 10% काटी की रखा हबो, सरकार 14% लगेबे। ओके, लेट सपोज जने 1 लाख रुपीस तार सैलरी अछि, 1 लाख रुपीस से 10% दबो, दैट इज 10,000। ओके, 10,000 तादर सरकार देबे 14%, दैट इज 14,000। टोटल 24,000 रुपीस पर मंथ, ओके, विल बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट। मार्केट से 24,000 rupees will be invested, and whenever the person will retire, they will give you the money. Okay, जेतले person retire हबो, retire होला परे ताकू से माने पैसा देबे। There will be some lump sum money during the retirement, or at the time of retirement there will be some lump sum money, and also there will be some monthly recurring or monthly pension will be given, that is under NPS. Next scheme is UPS, Unified Payment or Unified Pension System. এটা নয়া স্কিম আসছি। ओके, NPS रे किछि इश्यूज थिला जोटा को सॉल्व करिया पे गवर्नमेंट केम अप विथ UPS। ओके, नया स्कीम एथरे कोन करा होची, एथरे तमरो मिनिमम पेंशन को एन्श्योर करा हबो। एनपीएस रे कोन थिला, पैसा मार्केट लागिची, मार्केट जदी खराब रिजल्ट करची ताले किछि ग्यारंटी नथिला कि इनकम केते आसीबो, मंथली इनकम केते आसीबो, 20,000 आसीबो, 30,000 आसीबो, 10,000 आसीबो, केते आसीबो कहि होबनी। बट अंडर दिस UPS, गवर्नमेंट guaranteed or ensure that a minimum amount for every post or for every designated post depending upon the salary, से माने गोटे मिनिमम अमाउंट देले कि एत्ती की मिनिमम अमाउंट रो पैसा पेंशन रे मिलिबो ही मिलिबो। ओके, दैट इज UPS। फाइन, नाउ विल सी अदर स्कीम्स। देखले हमें ओके रेवेन्यू। ओके, लास्ट देखो, लास्ट होते हले कहूची हम आगु जिबा। देन इनकम पार्ट रे, ओके, सरकार इनकम पार्ट रे कोन कोन अछि। फर्स्ट इज इनकम टैक्स। ओके, एटा प्रिलिमिनरी रे बहुत थोर पचारछि, बोधे लास्ट ईयर की ता आगे वर्ष पचार थिला। द सोर्स फ्रॉम व्हिच द गवर्नमेंट रिसीव्स मैक्सिमम इनकम, को सोर्स रु गवर्नमेंट मैक्सिमम इनकम जनरेट करे। ओके, whether it is GST, whether it is income tax, whether it is cess। देखो, इनकम टैक्स रु सरकार को मिलियो 14 लाख करोड़। केते मिलियो? 14 लाख करोड़। जीएसटी रे केते मिलियो? जीएसटी विल गिव द गवर्नमेंट 12 लाख करोड़। कॉर्पोरेट टैक्स रु मिलियो केते? 11 लाख करोड़। एक्साइज ड्यूटी 3 लाख करोड़, एंड कस्टम 2.4 लाख करोड़। ओके, इनकम टैक्स 14 लाख कोटी, जीएसटी 12 लाख कोटी, corporate tax 11 lakh crore, 3 lakh crore from the excise duty, and from custom it is 2.4 lakh crore. Next we'll go to the next slide. Okay,
এটা টিকে প্রিলিমিনারি ফ্যাক্ট মনে রাখিব ফার্স্ট पे कमिशन 7th पे कमिशन and 8th पे कमिशन 8th पे कमिशन is some justice of chief justice of supreme court some desai some PR desai or something some P Ranjan desai देखियो एटा तांग ना पचारे क्वेश्चन रे ओके आ गोटे जिंस मन रखियो एटा मेंस पई this investment target of this year is 47 crore 47,000 crore एथरो हम केते रखछन टारगेट हम रखछन 47,000 crore disinvestment माने कोन disinvestment माने सरकार पाखरे जो ओनरशिप अछि कंपनी रो तादरो किछि परसेंट ओनरशिप से बिकि देबे यदि 50% अधिक बिकि देले सेटा त हेगला प्राइवेट हेगला दैट इज प्राइवेटाइजेशन but we are talking about this investment government has a certain department in the ministry of finance गोटे certain department अछि जना हला department of disinvestment सन कोन करंती ता काम होला disinvestment pipeline तैयारी करिवे जो अछि national monetization pipeline ओके से माने disinvestment रो प्लान करिवे आ प्लान करिकी किछि किछि certain percentage of the government share will be sold to the private player फायदा कोन हो disinvestment कले प्रथम कथा तो हला सरकार को किछि पैसा मिलिबो that can be used in that can be used for other purposes ठीक अछि that may be used for welfare scheme that may be used for creation of highways creation of new medical colleges creation of hospitals schools college एसब रे हमर काम लागिबो आ कोन होबो जेतरा प्राइवेट प्लेयर आसीबे the private player will bring with them the efficiency and innovation private player सब बड़े innovation काहे नहीं कैसे because they have a constant pressure of generating profit to the company तांगो कंपनी को प्रॉफिट देबा को पड़िबो तो से माने को इनोवेशन आनिया को पड़िबो obviously जोटी प्राइवेट प्लेयर आसीबे गवर्नमेंट रो भी कॉस्ट कटिंग होबो along with expenses of the government will reduce the efficiency will increase and also the innovation will come into the field innovation भी आसीबो गवर्नमेंट को फायदा होबो फाइन जेतले 50% अधिक गवर्नमेंट बिकि देबो दैट विल बी नोन एज प्राइवेटाइजेशन लास्ट ईयर लास्ट बोधे अराउंड 2-3 इयर्स तळे एलआईसी रो किछि पार्ट सरकार बिक्री करथिले ओके नाउ अगेन दे आर planning to do some disinvestment in the LIC also okay এটা generally are done for PSU जो public sector utilities अच्छी public sector enterprises जो अच्छी okay like the NTPC से सब रु सरकार कोन करिवे डिसइन्वेस्टमेंट करिके धीरे धीरे ताको पैसा जो लगैथिले पैसा आनिबे कारण दैट इज द गवर्नमेंट मनी ना गवर्नमेंट ताको पैसा लगैकी क्रिएट करथिला जेतले प्रॉफिट अछि तो गवर्नमेंट ताको कोन करी तादु पैसा आनी अलगा काम लगैबे और मे बी इफ द PSU इज मेकिंग लॉसेस तादरु गवर्नमेंट को किछि इनकम ही होनी प्रति वर्ष गवर्नमेंट को अगेन एंड अगेन गवर्नमेंट नीड टू पुश मनी इनटू दैट लॉस मेकिंग PSU जे सेमति किछि PSU अच्छी जो सरकार को लॉस होची इट्स बेटर कि सरकार ताको बिकी की पळे आसीबे पैसा नै की तो से पैसा रे सरकार अलगा किछि स्कीम्स करिवे जो प्राइवेटाइजेशन हबो जो प्राइवेट कंपनी ताको किनि नबो दे विल डू सम एक्सपेरिमेंट एंड दे विल मेक प्रॉफिट राइट गवर्नमेंट रो जोटी लॉस मेकिंग होची सब बळे सेठी लागि कोन माने अछि तो ऑब्वियसली तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट रो गोटे प्लान करे ताको बजट रे रखे आर थरो गवर्नमेंट प्लान करथिला 50,000 crore disinvestment pay, but they can achieve only 33,000 crore. 50,000 कोटी टंकार डिसइन्वेस्टमेंट प्लान थिला 33,000 crore हैला एथर गवर्नमेंट टिके कम करची प्लान केते करची 47,000 crore is being planned to be disinvested. Okay, disinvestment हेगी 47,000 crore रो इनकम जनरेट हबो अच्छा सेटा कोथरे आसीबो कैपिटल ना रेवेन्यू आसीबो परमानेंट बिक्री होची ना permanent change in the ownership so that will comes under your capital right now we'll go to the next topic is India's resource mobilization
फाइन इंडियाज रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बड़ करछि India's resource mobilization strategy post 1991 liberalization, its impact on countries' economic growth and development. Acha, 1999 is a watershed moment in Indian economy. 1999, sorry, 1991. 1991 is a watershed moment in Indian economy. Watershed moment माने कौन? माने ता आगुरु जहाँ हमर इकोनॉमिक रो कंडीशन थिला ता परे जहाँ हमर इकोनॉमी रो कंडीशन हला दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट सेटु हमर बहुत की चेंजेस होला एट दैट टाइम ऑफ 1991 इंडिया हैज लेफ्ट विथ वेरी लेस अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम पाखरे जति पैसा थिला इंडिया कैन सस्टेन ओनली अप टू 8 to 10 days हमें जदी बाहर कारण बहुत दिन हमें बाहर मगुले इंपोर्ट करथिले तो हम पाखरे ओनली 8 to 10 days रो पैसा थिला ओके कोन हला सेतले बहुत सारा कंडीशन अछि ड्यू टू व्हिच द रिफॉर्म हैज स्टार्टेड इन इंडिया ऑब्वियसली फायदा त हमको मिलला बट व्हाट आर द कंडीशंस कोन पई सेतले हला काई ता आगुर तो हे नथिला लिबरलाइजेशन 1991 रे जो हला हम कहउछन वाटर सेड मूवमेंट तापर बहुत कुछ चेंज हला 1991 काहेंगी ता आगुर काहे नुए ता परे काहे नुए because at that time what happens USSR was already disintegrated ठीक अछि USSR तारो disintegration हे छथिला गोटे बड़ कंट्री भांगी की 10 टा 15 टा कंट्री हे छथिला तो USSR was working as a support system for India सेतबेले USSR जेतल भांगी गला से निजर अलग अलग देश बहुत सारा हे गले ता पाखरे माने रिसोर्स आ रहलानी जोटा किछ इंडिया को हेल्प कर परियो ओके आ कोन थिला आमे तळे आईएमएफ पाखु गले कि वर्ल्ड बैंक पाखु आमे गले कि वी नीड मनी टू सस्टेन आवर इकोनॉमी दे सेड वी विल गिव यू मनी बट विथ सर्टेन कंडीशन जेतळ हम बाहर पैसा नाही देश भी हमको चलायार अछि आमे आईएमएफ पाखु गले वर्ल्ड बैंक पाखु गले सेमन मना कले कहले आमे तुमको सेमिति पैसा दे परिबनु आगु जो जेमि दउथुलु we need to okay we need to or your country India need to reform India need to reform its market कौन रिफॉर्म होबो आगुरु हम इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थिला क्लोज्ड इकोनॉमी माने आमे बाहर देश सहित मार्केट हमरो ओपन नथिला ओके हमें बाहर देश ऑब्वियसली हमें इंपोर्ट तो करथिले बट से इंपोर्ट भी कम एक्सपोर्ट तो बिल्कुल बहुत ही कम थिला तो हमें क्लोज्ड इकोनॉमी हिसाब से काम करथिले से तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दे टोल्ड दैट इंडिया मस्ट रिफॉर्म द मार्केट टू रिसीव मोर फंड्स तो इंडिया को रिफॉर्म करिया पड़ला तो रिफॉर्म में हमें कौन रिफॉर्म कले हमें एट देखिबा पोस्ट 1991 एलपीजी रिफॉर्म एलपीजी मींस L stands for liberalization, P stands for privatization, and G stands for your globalization. Okay, we need to understand what is LPG means. L stands for your liberalization, ठीक है? L for liberalization, P stands for your privatization, and G stands for your globalization. Okay, liberalization माने कौन? Liberalization माने हला there was some certain specific sector which was completely dominated by government. बहुत सारा सेक्टर थिला गवर्नमेंट तापर पूरा कंट्रोल रखथिला इवन एबे जो हम देखछन आमो बस मो बस जोटा थिला एबे आमो बस हेची किछि ओएसआरटीसी रो बस चलची 1990 पाखा पाखी जत्ते सब लॉन्ग रूट बसेस थिला सब बसेस गवर्नमेंट रो थिला प्राइवेट मानकर सेठी एंट्री नथिला मे बी पैसा रो कमी थिला व्हाटएवर द रीजन मे बी गवर्नमेंट बस सबुट खराब कंडीशन रे
येलो येलो कलर बस चलथिबो तादरे ना तो पुश बैक थिबो ना तो एसी तो बहुत दूर कथा किछि नथिला माने गवर्नमेंट ताको कब्जा कर रखथिला कि ये सब मो डोमिनेशन रे रहिबो बट आफ्टर लिबरलाइजेशन व्हाट गवर्नमेंट हैज टू डू गवर्नमेंट को किछि स्पेसिफिक सेक्टर रखि कि बाकी सब छाडिया पड़िबो छाडला भी जेमति एटॉमिक एनर्जी रखिछि रेलवे रो किछि पोर्शन हमको रखा है जी राइट बाकी सब ओपन करा है जी भी आसी कि हम सहित मार्केट रे कंपटीशन कर परियो गवर्नमेंट भी बस चलछि मो बस आम बस ओएसटीसी रो बस चलछि प्राइवेट बस भी चलछि गवर्नमेंट तार प्राइस से चलुछि प्राइवेट वाला तांग प्राइस से चलुचंती मार्केट डिसाइड करछि जो लोक को जेमति सुविधा होछि से गवर्नमेंट बस से जीवा चाहे गवर्नमेंट बस से जाउछि प्राइवेट बस से जीवा चाहे प्राइवेट बस से जाउछि तो लिबरलाइजेशन पर कोन हला प्राइवेट प्लेयर आल्सो माने सेक्टर को हम ओपन कले सब किछि स्पेसिफिक सेक्टर छाडला परे सब सेक्टर समस्त में ओपन करा गला देन व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन मु जेमति कहली पीएसयू गोटे अछि हम पाखरे ठीक अछि सेतरे हमें 10 लाख करोड़ रो इन्वेस्टमेंट करछन 10 लाख करोड़ रो बट दैट इज लॉस मेकिंग प्रति वर्ष लॉस होछि माने गवर्नमेंट को लेट सपोज प्रति वर्ष गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ रो लॉस होछि सेठी तो गवर्नमेंट सेठी रही कोन करछि गवर्नमेंट 10 लाख कोटी टका इन्वेस्टमेंट कला प्रति वर्ष लक्ष लक्ष टंकार तार फेरे लक्ष कोटी टंकार फेरे इन्वेस्टमेंट होउछि किछि फायदा ही होउनि ताल गवर्नमेंट हेठी कोन माने रहियार कोन कारण कोन अछि तो गवर्नमेंट कोन करिवो प्राइवेटाइजेशन माने हला minimum 51% of the minimum 51% of the ownership of the share will be sold to the private okay government entity ro jetawale minimum 51% of the share will be sold to any private entity that will be termed as a privatization minimum 51 70 80 100 किछि भी बिकि पारे अच्छा 51% जो चेंज हो सेतल कोन हबो जेतले जने गोटे कंपनी 51% शेयर किनिबो गवर्नमेंट रो then that party or that entity will become the ओनर ऑफ द कंपनी से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थिला जेतले प्राइवेट प्लेयर ताको किनला देन द प्राइवेट एंटिटी विल बिकम द ओनर जेतले से ओनर होबो से कोन करिवो फर्स्ट देखियो काहे लॉस मेकिंग होची काहे लॉस मेकिंग होची व्हाट आर द कॉजेस बिकॉज़ ऑफ टू थ्री थिंग्स फर्स्ट ला इक्विपमेंट बहुत खराब थिवो सेकंड ला इनइफेक्टिवनेस ऑफ द पीपल लोकन कोते तार लॉस होची तो कंपनी लॉस होता मते तो मोर सैलरी मिलची ना and there is no innovation ना तो रिसर्च करिया अछि ना तो डेवलपमेंट करिया अछि ना तो न्यू टेक्नोलॉजी को लगायार अछि जहां चलछि सेमति चलथाउ बट प्राइवेट असले तो सेमति होबनी तो प्राइवेट असले कोन होबो तो कोन काम करिया पड़िबो तांकर एफिशिएंसी बढ़िबो नुवा नुवा इनोवेशन होबो कारण कॉस्ट कटिंग करिया कले इनोवेशन दरकार तो इनोवेशन भी होबो दैट विल मेक मोर प्रॉफिट ठीक अछि प्राइवेटाइजेशन बुझलो कोन हला जेतले ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट owned entity is changed to private. And what about globalization? Globalization means the market is now open to everyone. आगुरु हमें कौन कहले लिबरलाइजेशन कहले कि प्राइवेट वाला आसो तमे हमरो आम सहित कंपीट करे तुम चलाओ बट ग्लोबलाइजेशन कोन हला द मार्केट इज नाउ ओपन टू एवरीबॉडी यदि कोनोसी बाहर रो कंपनी लेट्स सपोज यूएस रो गोटे कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने जाओ से आसी कि इंडिया रे करिया चाहबो इट इज ओपन गूगल से करि परिबो तो ग्लोबलाइजेशन कोन हला इंडिया मार्केट इज नाउ मिक्स्ड और इट इज नाउ ओपन टू एवरीवन इंडिया भी बाहर को एक्सपोर्ट करछि इंडिया बाहर इंपोर्ट करछि नाउ द मार्केट इज ओपन एबे सरकार कहिबेनी डाली रेट केते हबो डाली रेट कहिबे ऑब्वियसली एटा तो एसेंशियल कमोडिटी माने सरकार कहिबेनी गोटे गाडी रेट केते हबो राइट गोटे गाडी अछि समान परफॉर्मेंस रो गोटे गाडी लाख टका अछि गोटे गाडी 2 लाख टका अछि गोटे गाडी 5 लाख टका अछि समान कंपनी समान एफिशिएंसी सॉरी कंपनी समान नो समान कैपेसिटर इंजन समान कंफर्ट समान माइलेज समान परफॉर्मेंस बट रेट डिफरेंट अछि तो लोक माने का किनिबे लाख टका किनिबे काहे अजथा एते पैसा खर्च करिवे 2 लाख 5 लाख तो एठी कोन हला ऑब्वियसली जो माने बिकुथले 2 लाख 5 लाख तांगा तो गाडी चलीबोनी तो रेट केते हबो फाइनल से माने भी लाख टका आनी कि तांगु बिकेउ पड़िबो तो एठी रेट के डिसाइड कला मार्केट ना कि रेट डिसाइड कले गवर्नमेंट आगुर कोन होतला गवर्नमेंट कहउतले कि 100 सीसी रे तुम बाइक तयारी करियो तो कॉस्ट विल बी 1 लाख राइट तो सेतल कोन होतला गोटे मार्केट रे गोटे लागि जाउतला कि 1 लाख भीतर मते गाडी तयारी करे अछि राइट तो एबे ताको मार्केट डिसाइड करियो ना कि गवर्नमेंट डिसाइड करिवे ओके सो दीज आर द थ्री टर्म्स लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन
1991 तापर कोन हला ओके हमरो एग्जाम रे जो सिलेबस अछि सिलेबस क्वेश्चन रे पढिबा कोन लिखा अछि इंडिया रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी पोस्ट 1991 ओके कोन लिखा अछि रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी पोस्ट 1991 its impact on countries economic growth and development तारो impact कोन पड़ला कंट्री रो ग्रोथ ऊपर कंट्री रो डेवलपमेंट ऊपर अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट okay just 2 minutes what do you mean by growth what do you mean by development पाखापाखि समान वर्ड लागुथो बट दैट इज डिफरेंस ग्रोथ कोन होई परिबो ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव टर्म क्वांटिटी ठीक है ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव टर्म डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव आउ कोन होई परिबो growth can be both negative or positive okay आमे बेले कोन ना नेगेटिव ग्रोथ हे गला आम जीडीपी नेगेटिवली ग्रोथ कला माने माइनस आम जीडीपी पळे आसला राइट तो ग्रोथ कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव बट डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव राइट एंड द लास्ट थिंग इज for a developed society or the growth is the precondition for development यदि growth positive होबो then only development will happen यदि growth negative होबो ताले development हे परिबोनी growth is the precondition for development okay let's suppose हमर स्कूल थिला 10 टा स्कूल थिला ताको हम बढ़े के 15 टा स्कूल गले ओके ग्रोथ हला स्कूल लो केतरा ग्रोथ हला 10 बढ़े के 15 हला ओके आमे देखिया बे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कोन अछि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आ जो पिला माने पढुथिले सेटा बढ़ी छि ना कमी छि ऑब्वियसली यदि स्कूल बढ़ी छि हमरो डेवलपमेंट भी होवा दरकार माने अधिक पिला पाठ पढिया दरकार सुनो और लेट सपोज जेति हमरो 10 टा हॉस्पिटल थिला ता 15 टा हॉस्पिटल गले तला हमें देखिया पड़ियो हेल्थ केयर हम सुधुरछि कि नहीं यदि हेल्थ केयर सुधुरनी ताले हॉस्पिटल रो माने कोन रहिला आमे जो कहले ग्रोथ ऑफ हॉस्पिटल that is having of no meaning if there is no change in the health condition of people right so these are the basic differences in growth and development मन रखियो सबले डेवलपमेंट ता सबले पॉजिटिव होबो ग्रोथ कैन बी बोथ नेगेटिव पॉजिटिव development terms or talks about the quality whereas the growth talks about the quantity right हम देखिबा वर्तमान को सेक्टर रे कोन चेंजेस हला फर्स्ट वन इज योर बैंकिंग सेक्टर ओके बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म बैंकिंग सेक्टर हमर कोन हला एटा जस्ट हम जे न्यूज़ पेपर पढिथे न्यूज़ पेपर न पढिया दरकार नै एटा तो बेसिक जिंस समस्त जानथिबे बैंकिंग सेक्टर हमर कोन हला कोन चेंज हला ओके फर्स्ट वन इज प्राइवेटाइजेशन तीनटा फेज रे बैंक रो प्राइवेटाइजेशन हला ओके गोटे 1993 पाखा बाकी गोटे 2003 एंड लास्टेस्ट वन इज अराउंड 2015-16 जेतले बंधन बैंक के खुलला दैट इज द लास्ट पेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ओके जेमिति गवर्नमेंट बैंक सब केतरा प्राइवेट करा गला फाइन एबे भी केतरा करा जिबे मर्जर ऑफ बैंक्स माने आगरो बहुत सारा बैंक्स थिला ठीक अछि बहुत सारा बैंक थिला बैंक रो बहुत सारा स्कैम्स हला सरकार बहुत लॉसेस हला तो सरकार कोन डिसाइड करले सरकार डिसाइड करले कि विल क्रिएट सच काइंड ऑफ बैंक व्हिच इज टू बिग टू फेल ओके पीएनबी गोटे बैंक माने अछि एबे भी पंजाब नेशनल बैंक सेतरे फ्रॉड हला ओके सेतरे फ्रॉड हला विजय माल्या पैसा नहीं पळेला ओके ना सुनतो नीरव मोदी से भी स्कैम करले फाइन तो गवर्नमेंट एमिति गोटे सिस्टम डेवलप करिया चाहथिले कि विल क्रिएट सच ए बैंक व्हिच विल टू बिग टू फेल ओके टू बिग टू फेल एंड जितले बैंक रो नंबर कमियो कोन हबो जितले बैंक नंबर कमिवो इट विल बी इजियर टू ऑडिट ओके बैंक जितले नंबर कमिवो इजियर टू ऑडिट से ऑडिट करिकि जानि परिबे कि हमर केते एनपीए रहिला केते डिफॉल्टर अछंती कोठी हमर रिस्क अछि इट विल इजियर ओके
सेतमे हमर मर्जर ऑफ बैंक्स हला बहुत सारा बैंक मर्जर होई छी फाइन देन PSL is public sector lending public sector lending माने कोन let's suppose 100 rupees is with the bank पर 100 rupees अच्छी बैंक पर तीन प्रपोजल अच्छी गोटे इंडस्ट्री आसी से कहछि कि मते तुम 70 रुपीस दे दियो मुने कि बिजनेस करी मोर एक्सपांड करी कंपनी को आ जा प्रॉफिट हो से तुम इंटरेस्ट आ जा तुमरो लेथिबी पैसा मु फेरे देबी गोटे फार्मर रहला से कहला मते दरकार 30 रुपीस मोर कोन पे दरकार कि मोर हार्वेस्टिंग ना मोर एबे सीड वगैरह लगेर अछि ओके जेतरा मोर हार्वेस्ट हो मु आनी तुम पैसा दे देबी ओके आ गुड लोक कहला से कहला मते दरकार अछि 40 रुपीस बैंक कहला कोन पे दरकार 40 रुपीस कहला कि मते 40 रुपीस से मोर पढ़ियार अछि ओके तो बैंक पाखरे भी तीनटा ऑप्शन देखो ता पास 100 टका अछि से चाहिले भी तीन जण देई परिबनी तो से कहा पैसा देवा प्रिफर करियो से जानिबो जदि मु पिल्ला को पैसा देली पिल्ला पढ़ला परे जदि मते पैसा न देला काहे पिल्ला न दबो बिकॉज़ इट मे हैपन दैट से पिल्ला पढ़ला परे ताकू मे बी चाकरी मिललानी किछि भी कारण रो ओके ताकू चाकरी मिललानी कि किछि भी हला तो से पैसा मे बी डिफॉल्ट हे पारे से न दे पारे ए जो 30 रुपीस किसान को अछि किसान पाखरु आमे जदि पैसा दबा जदि किसान रो फेल हे गला फ्लड हे गला कि ड्रॉट हे गला ताल तार तो इनकम जीरो हे जो तार इनकम हला जदि जीरो हला से मोट तो 30 रुपीस नै से केम फेरेबो से तो फेरे परिबो नै बट मु जदि इंडस्ट्री को दोची 70 रुपीस एटा मोर कोन अछि इंडस्ट्री मते फेरेबो काई फेरेबो बिकॉज़ इंडस्ट्री तो तार कागज पत्र मते देखि जीवो ना से न फेरी कोड जीवो तार प्रॉफिट हो भी थयो प्रॉफिट हले से मते रिटर्न भी करिवो तो बैंक रो कोन पैसा काम पैसा लगेबो इंटरेस्ट आसीबो तार इंटरेस्ट तार इनकम सुनो तो बैंक कोन करियो कहियो ठीक अछि मु 70 रुपीस आको दे देबे रिजन मना करे को नाही दे हो नै डॉक्यूमेंट नाही ये नाही से नाही वेरियस रीजन मना कर दो सरकार कोन कहले सरकार कहले कि नाही सेमती होबो नै गोटे PSL स्कीम आले पब्लिक सेक्टर लेंडिंग सरकार कहले तुम जहा करे कुछ करो तुम पाखे 100 टका अछि then certain amount of money around 40% of money will be given to PSL सरकार कोन कहले तुम पाखे जते पैसा अछि तार 40% of money will be given to PSL आ सरकार कहले PSL भी मु डिफाइन कर दोची कोन कोन PSL होबो PSL will be education PSL will be agriculture PSL will be renewable energy ओके एमती किछि करी कि सरकार सेक्टर्स सब डिवाइड कर देले आ कहले ए सब होला PSL and the commercial bank must give this much amount of money to the PSL sector तम दबा को बाध्य फाइन तो कौन कौन आमे देखले प्राइवेटाइजेशन देखले मर्जर ऑफ बैंक देखले PSL देखले आ गोटे कमिटी आस्थिला खाली कमिटी नाम मन रखो दैट इज FSLRC कमिटी ओके से जेतले प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हैला 1991 रे सेतले गोटे कमिटी आस्थिला FSLRC ओके इट इज हेडेड बाय BR श्रीकृष्ण ओके तांगो नारे कमिटी हितला BR श्रीकृष्ण कमिटी तांगो अनुसार ए सब जिंस हितला द रिफॉर्म ओके दैट टाइम द फाइनेंस मिनिस्टर वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थिले सेतले एटा हितला एंड वाज द PM दैट टाइम PM के थिले PV नरसिम्हा राव ठीक है PV नरसिम्हा राव was the PM and Dr. Manmohan Singh was the finance minister that time that LPG reform happened. Next देखिए next effect. What are the next effect on privatization of PSU and shifting the managerial control to reduce government role in economy. कहला प्राइवेटाइजेशन हेले कोन होबो जेतबेले सरकार पाखरे 100% ओनरशिप अछि सरकार गोटे कंपनी रो ताको डायरेक्टर रिक्रूट करिवे
maybe some bureaucrat will be recruited as the director of the company, and the bureaucrat will handle it. Okay, ଯେତେବେଳେ bureaucrat handle କରିବ, there will be some challenges. Bureaucrats is good for general things, but ଯେତେବେଳେ ଆମେ specialized things କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ bureaucracy certain things ରେ they will lack. ଯେମିତି technological ଆମର innovation ହଉଛି, ଯେମିତି market ଆମର changes ହଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷରେ bureaucracy control କଲେ it is not good for our economy. ସେଠି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ, privatization of PSU and shifting the managerial control. गवर्नमेंट କ'ଣ କଲେ 51% ରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ତାଙ୍କର ବିକିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ କି କିଣିବେ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ସେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ପଇସା ଦେଇ କିଣିବ, ସେ ତାର ଓନରସିପ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ତାର ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ସେ ତା ପାଖରେ ମ୍ୟାନେଜର ରଖିବ, ସେଭଳିଆ ମ୍ୟାନେଜର ରଖିବ ଯିଏ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। डिसइनवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, आगु इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट थिला, तार को कहली डिपार्टमेंट ऑफ डिसइनवेस्टमेंट। फाइनेंस मिनिस्ट्री को डिपार्टमेंट अछि, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइनवेस्टमेंट। तार काम कोन हला, तार काम हला से मोनेटाइजेशन पाइपलाइन तयारी करिवो। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मींस से गोटे सिस्टम तयारी करिवे जोथि से माने रखिबे कि आपरे आको हमें स्कीम कर जिबा, सेथु हमको पैसा इनकम हो। ओके, डिसइनवेस्टमेंट वाज डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिसइनवेस्टमेंट। ओके, there is a department DIPAM, Department of Investment and Public Asset Management. Okay, then third हम देखिबा opening of economy। कहला जतला हमरो ग्लोबलाइजेशन हला, that time our economy is open। कहा को ओपन करा गला, now the economy is चेंज फ्रॉम प्लांट टू मार्केट। प्लांट इकोनॉमी कोन, मु जेमि कहथली गोटे गाड़ी तयारी कले सरकार फिक्स करिवे कि गाड़ी को हमकु केतना बिके पड़ियो, द कॉस्ट ऑफ द बाइक विल बी 1 लाख रुपीस। लेट सपोज गवर्नमेंट डिसाइड कर देले, तो तादरे इनोवेशन तो किछ हेई परियो ना। जो कंपनी भाबियो कि मु गोटे भलो गाड़ी तयारी करिवि, तार कॉस्ट मु रखिबि 2 लाख टका, लोक तो किनिबेनी, राइट। कारण से यदि कहबो कि ना ना मु 100 सीसी नो मु 200 सीसी रो गाड़ी किनिबी, माने मु तयारी करिवि, मु एक्स्ट्रा फीचर देबी, दैट टाइम द कॉस्ट विल बी मोर। बट गवर्नमेंट तो कहछि कि 1 लाख रुपीस करिया पड़िबो, तो इनोवेशन नहीं परिबोनी। बट जेतेबेले मार्केट ओपन हे गला, ठीक अछि, तू 2 लाख टका नउछु, बाकी तू 150 सीसी रो गाड़ी बनउछु, आ जने गाड़ी बनउछि, ओके, आ गोटे कंपनी अछि, he is making the bike at 1 lakh rupees, but the engine size is 100 cc। तो लोक डिसाइड करिवे तांको 2 लाख रुपीस 150 सीसी दरकार कि 1 लाख, सॉरी 2 लाख रे 150 सीसी दरकार कि 1 लाख रे 100 सीसी बाइक दरकार। द पीपल विल डिसाइड, दैट इज द मार्केट डिसाइडर, दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, देन देयर विल इंक्रीज इन FDI or FPI। FDI means foreign direct investment, and FPI means foreign portfolio investor। Okay, FPI is actually the institutions। Okay, जेतल FDI काहा को हम कहबा, FDI हम सेतल कहबा जेतले गोटे कंपनी रो मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट गोटे बाहर कंपनी करिवो। लेट सपोज यूएस रो कंपनी इंडिया रे गोटे हीरो कंपनी अछि, सेतरे से जेतले मिनिमम 10% ओनरशिप किनिवो, दैट विल बी नोन एज FDI। ओके, मिनिमम 10% किनिया दरकार FDI पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तार कोन हो, पैसा भी आसीबो हम कंट्री को, पैसा आसले कोन हो, इनोवेशन भी आसीबो, टेक्नोलॉजी भी आसीबो। ओके, तो यदि मार्केट देखियो माने मार्क करिवो आफ्टर 1990 in especially in भुवनेश्वर, तुम देखियो भुवनेश्वर रे नाउ अराउंड 60-70 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ओके, इंजीनियरिंग कॉलेज 60-70 अछि कि मे भी अधिक। 1990 आगु नथिला, काहे नथिला, कारण सेतबेले हम पाखरे ना तो पैसा थिला, ना तो पढ़ला पर चाकरी थिला, नथिला। जेतबेले हमें मार्केट को ओपन कले, सेतबेले हमर स्किल्ड लेबर दरकार हेले।
हमको इंजीनियर दरकार प्रोडक्शन पे, हमको आईटी फील्ड रे काम करिया पे स्किल्ड लोक दरकार, तो एते सारा इंजीनियरिंग कॉलेज सेत में खोला बिकॉज दे कैन गिव एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म, ऑल दिस हैपन। यदि हेन था ताले जेमती आगुर गोटे दिरा सरकारी कॉलेज 3-4 प्राइवेट कॉलेज सेमती चलता सिस्टम, राइट। And now our foreign reserve is around 654 billion 2025 କଥା କହୁଛି, ଏବେ ଆହୁରି ବଢିକି 700 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବନି। 654 billion forex reserve we have, foreign reserve ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, and it also brings stabilization of our economy। ଆମ ଇକୋନୋମି କୁ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଇସା ନଥିବ ଆମେ କାହାଠୁ ଡେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବା, ସେ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଗାଇଡଲାଇନ ଦଉଛି ତମେ ସେଇ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। So we don't have any independence, ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ ହେଇପାରିବନି। But now as we have certain amount of money with us, forex reserve ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ହେଲାଣି, ତ we have stabilized our economy। ଓକେ, ତା ଫଳରେ ତ ଆମେ ଆଜି 4th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି, 4th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି କେମିତି ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି obviously because of the population, but what about the 4th largest economy? को पछरे हम पढ़िथिले, राइट। एसब रिफॉर्म हैला, लोक मान बाहर पैसा आसला, लोक माने पैसा खर्च कले, इनोवेशन हैला, टेक्नोलॉजी आसला, सो दैट आमे आज आसिके एते बाटर पहुंचंती, राइट। आ गोटे जिंस, whenever you are writing exams for civil services, okay, maybe your opinion may be different, okay, तुमको करंट गवर्नमेंट भल लगते पारे, करंट गवर्नमेंट खराब लगते पारे, बट ऑलवेज ट्राई टू बी न्यूट्रल। आ आंसर राइटिंग बेले गवर्नमेंट स्कीम को सब सपोर्ट करिया अछि। जेतल तुम क्रिटिसिज्म करिवो दैट मे बी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, माने 8टा पॉइंट तुम लिखलो, भलो लिखलो, गोटे पॉइंट लिखलो कि 2टा पॉइंट लिखलो कि एटा कले इंप्रूव करिवो, नॉट कि एटा खराब। ओके, व्हाटएवर योर बायसनेस जस्ट लीव इट। एग्जाम रे तुमको गवर्नमेंट स्कीम विषय लिखिया अछि आ भलो लिखिया अछि, राइट। And also we have fiscal reform। Okay, fiscal reform में कौन है? कटिंग डाउन ऑफ सब्सिडी। दीटा जिनस मन रखिए, गोटे मॉनिटरी, गोटे फिस्कल। मॉनिटरी, फिस्कल। मॉनिटरी मींस मॉनिटरी पॉलिसी, लाइक जोटा आरबीआई करिवो दैट इज मॉनिटरी, जोटा गवर्नमेंट करिवो दैट इज फिस्कल। ओके, जोटा आरबीआई सहित रिलेटेड, जेमिति रिपो रेट, रिवर्स रेपो, ओके, देन तमरो ओपन ओएमओ, ठीक अछि, जहाँ सब रहिला सेतरे सब रहिबो तमरो मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई। जोटा गवर्नमेंट करिवो दैट इज फिस्कल। तो गवर्नमेंट रे हम कोन देखले कटिंग डाउन ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी कटिंग डाउन हेजी एसन न। आगुरु हमरो 2014 आगुरु गैस मिलुथला 400 सम 400 प्लस केते गोटे थिला ऑन नहीं 450 460 किछि गोटे थिला। कोन सेतरो गैस रेट कोन 400 रुपीस थिला? सरकार कोन 400 रुपीस किनुथला? नो, सरकार वाज बाइंग दैट at around 1100 or 1000। सरकार 1000 रुपीस पाखा किनुथला, बट ता केते ना बिकुथले 450 रुपीस बिकुथले। माने सरकार हेते तुम सब्सिडी दोथले, सुनो से पैसाटा कोठी आसीयो फेर? सरकार जो सब्सिडी देले से पैसाटा फेर केमति मेकअप करा जीवो? आगुरु किरोसिन थिला सम अराउंड 15-20 रुपीस मिलथला। गवर्नमेंट केते ना किनुथले? गवर्नमेंट तयारी करथले 100 रुपीस से बिकुथले केते टंका? 15 टंका 20 टंका। जो पीडीएस अछि ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सोप्स वगैरह जो अछि, कंट्रोल दुकान जोटा हम कहउछंदी, 15 टंका 20 टंका सरकार बिकुथले। किनुथले केते टंका? 100 टंका रे। 100 टंका तयारी करी 20 टंका 15 टंका बिकिबे, दैट इज आल्सो सब्सिडी। नाउ kerosene is the only thing, okay, मन रखियो, kerosene is the only thing जो सब्सिडी पूरा खत्म हो जायछि। नाउ इट इज बीइंग सोल्ड एट 100 रुपीस। कौन प्रॉब्लम होतला आथरो? गरीब लोगों पे तो मिलथला, कौन प्रॉब्लम होतला? प्रॉब्लम एटा होतला केवल गरीब लोगों को मिल नथला। केतବେଳେ हमको काहे दूध दिया होतला केरोसिन? केरोसिन दिया होतला बिकॉज़ हमें एलपीजी देई पानथले, एलपीजी रो प्राइस अधिक थिला। तो जेतବେଳେ सरकार उज्ज्वला स्कीम कले, एलपीजी देले, से तो लोक माने गैस यूज कले, सेतला लोक माने केरोसिन लगे कोन करिवे? बट कोन होतला जेतବେଳେ केरोसिन जो 15 टका 20 टका मिलुतला, किछि जो माने फार्मर अछंदी, बिग फार्मर, नॉट द स्मॉल फार्मर, जो माने डीजल रे तांकर
ऑपरेट करिया कथा तांको मशीन ओके जो डीजल इंजन था जो से पानी पंप करती दे आर बाइंग दैट एट द कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज से कौन करते 30 टका किडनी पड़ोले डीलर टू नहीं काम लगाते डीलर भी खुशी मत 15 टका बिका मत 1 लिटर 15 टका मिलने बट दैट इज लॉस टू गवर्नमेंट शुण किसी बस थे से कहते आम ठीक अच्छे डीजेल तो एत कस्ट अच्छे आम 40 टकर केरोसिन किणी चलेबू केरोसिन चलेले कौन पल्यूशन हम अधिक पल्यूशन हम बट से दे आर नॉट केयरिंग अबाउट इट से निज फायदा देखुले तो गवर्नमेंट जो उज्ज्वला स्कीम नहीं आसले जो लोक मानू मिलगला गैस चूल्हा से यूज कर स्टार्ट कले गवर्नमेंट आप कंप्लीटली कौन कले सब्सिडी हटेदे एबे डीजेल जी केरोसिन से जहाँ को यूज कर केरोसिन यूज कर जहाँ को यूज कर डीजेल यूज कर नाउ इट इज अप टू यू राइट तो ये सब थाए सब आम पढ़ा जो माने सब्सिडी वगैरह पढ़ा ये सब जिन देखा केमी हाउ द सब्सिडी इज बीइंग मिसयूज्ड राइट कटिंग डाउन द सब्सिडी तापर कौन कौन हो पार कटिंग डाउन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली जो सब्सिडी कमिला गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर आउ अधिक करिया पड़ोनी ऑब्वियसली दैट विल आल्सो रिड्यूस एंड एफआरबीएम एक्ट जो आसला 2003 रे ओके फॉर नेशनल एंड स्टेट से कौन कहला यू नीड टू मैनेज योर फिस्कल डेफिसिट बिलो 3% 3% तले फिस्कल डेफिसिट को रखियार अच्छी गवर्नमेंट जब ये लोन करके लोक सब्सिडी दूसरे केमती कर राइट दिस इज द फोर्थ वन द फिस्कल रिफॉर्म नाउ foreign trade okay the next one is foreign trade okay foreign trade आम कौन हेतिबो obviously improve हेतिबो ऐसा नो जब आम मार्केट खोलला आम भी तो एक्सपोर्ट करियो ना तांगु तो फर्स्ट पॉइंट इज कटिंग डाउन ऑफ द ड्यूटी ड्यूटी माने कौन जो आम बाहर किसी जिनस नहीं आसुँच ओके ताकू जो आम देश भितर को नहीं आसिया वी नीड टू पे कस्टम ड्यूटी ठीक अच्छे जो बाहर गोटे किसी जिनस नहीं आसिया वी नीड टू पे कस्टम ड्यूटी सेटा को आम कम करागला आगुरी बहुत अधिक थी माने 1 लाख गोटे गाड़ी आम नहीं आसुले ताकू आमको अराउंड 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा आमको देवाक पड़ता मे बी 2 टाइम्स ओके 1 लाख रुपीज गाड़ी 2 लाख रुपीज कस्टम टोटल गाड़ी दाम है 3 लाख टका तो से ग्लोबल मार्केट केमिति इंडिया आसिक बिजनेस करेंगे तो आमको कौन कौन कम कले वी रिड्यूस द ड्यूटी एंड मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम माने कौन यार कहाँ को हम एक्सचेंज करछंदी ऑब्वियसली वी आर एक्सचेंजिंग द इंडियन करेंसी okay 1 USD is around 87 rupees ऐसा नो 85 87 90 तो ये किए डिसाइड करछि इट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट मार्केट रे कौन डिमांड अछि मनी रो रुपीस रो मार्केट रे कौन डिमांड अछि व्हाट इज द डिमांड ऑफ यूएस डॉलर एंड व्हाट इज द सप्लाई कार सप्लाई मार्केट रे अधिक अछि जा सप्लाई अधिक अछि जा डिमांड कम अछि ओके सप्लाई अधिक डिमांड कम तो तार कौन हो रेट खसी खसी जीव यूएस रो कौन होची तार डिमांड अधिक सप्लाई कम तो ऑब्वियसली इंडिया रो माने गोटे डॉलर किने गले हमको 87 रुपीस देबाक पड़छ आगर 60 रुपीस हे होतला 50 रुपीस हे होतला राइट बट बेले बेले गवर्नमेंट जानि सुनि कि भी हमरो मनी को डिवैल्यू कराए एटा मन रखियो बेले बेले गवर्नमेंट जानि कि भी हम मनी को डिवैल्यू कराए काहे डिवैल्यू कराए बिकॉज़ इट विल हेल्प अस टू एक्सपोर्ट द थिंग्स जो डिवैल्यू हम गोटे डॉलर रेट जो बढ़ी जीवो इंडियन ये जो आम कौन कर एक्सपोर्ट आमको इजी हो इंपोर्ट कॉस्टली हम ऑब्वियसली इंपोर्ट कॉस्टली हम बट एक्सपोर्ट विल बी इजी इट विल बी हेल्प आवर बिजनेस राइट तो गवर्नमेंट केबे केबे ए जिंस करे मन रखियो सब बळे नेगेटिव रे नबनी देन इकोनॉमिक ग्रोथ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट 1991 92 रे आवर जीडीपी ग्रोथ वाज अराउंड 1.1% कौन कहते हम कहते हिंदू ग्रोथ रेट मन रखियो हिंदू ग्रोथ रेट ओके केते रहला 1.1 कैन यू इमेजिन जस्ट 1.1% ऑफ जीडीपी
जस्ट 1.1 बट तापर केते हला तापर 90 टू 93 रे एटा बढ़ी के हेगला 4%. 2006-7 रे फर्स्ट टाइम पे वी रीच 10% टारगेट. 10% जीडीपी हम अचीव करछन. आ एबे केते रहउची एबे रहउची अराउंड 6 to 7%. 6 to 7%. हिंदू ग्रोथ रेट 1.1% हम आसी पड़े पहुंचले. एवरी 3 to 4 years हमरो जति की जीडीपी अछि दैट विल बी डबल्ड. 3-4 वर्ष 5 वर्ष हमर जीडीपी डबल हे चलछि. Right? That is because of the economic reform that we have done year back in 1991. केते वर्ष हेगला 34 33 34 years हेगला. Okay, so it is all. Now we will move to the next question. Okay, आजी एठी रखिबा बेसी आजी करिवानी तेरा काल टू पढिबा. नेक्स्ट क्लास काली अछि. ओके मु खाली गोटे दिनस कहि कि बंद कर देबे. राइट. हां तमे जेन फर्स्ट क्लास कहउथली कि हमें एटा को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रे करिया सो दैट गोटे गोटे क्वेश्चन को हमें केते इजीली ताको हमें मन रखिबा आ केते इजीली जांगे हम एग्जाम में लिखि आसीबा. ओके वी डोंट नीड एनी पीएचडी. हमु पीएचडी डिग्री दरकार नै. हमु दरकार decent score. सबल मन रखियो we need decent score. We don't need any degree. Okay, decent score हमको दरकार चाकरी. राइट. सिविल सर्विस प्रिपेयर होते हमको चाकरी दरकार ना कि लोग कोई इकोनॉमिक्स से तो बहुत जानी छी बाकी ता हेलानी माने तो किछि भी रहलन ना. मे बी नॉलेज बढ़ला हमरो बट जो एम पे आइले हेटा हमर हेलानी. वी शिफ्टेड आवर एम. सेटा हम करिया नै. कम टाइम रे जेते अधिक स्कोर ही परियो सेटा हम करिया. तो जति दरकार जति बुझिया दरकार सेति बुझौची. जोटा प्रिलिमिनरी पार्ट हे जिवो ताको मु ऑब्वियसली टी कवर करनी कारण प्रिलिमिनरी जदि पळेबा ताले हमरो मेंस हाउस सरी परिबनी. आवर टाइम विल बी वेस्टेड. वी हैव ए लिमिटेड टाइम. जेमि कहली 15 टा 20 टा क्लास भीतर हमको सारिया पड़िबो. ओके बहुत सारा सिलेबस अछि ताको 15-20 क्लास भीतर सारिया इज नॉट एन इजी टास्क. तो हमको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हे कि हमको हम एरिया पर फोकस करके जिबार अछि. ओके and believe me if you are attending all the classes of economic ମୁଁ ଏତିକି କହିଦେବି कि ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି एग्जाम हॉल रे बसिबो you will find so many direct questions from it. सबल तो प्रेडिक्ट करिया सहज नुह केते क्वेश्चन आसीबो but you will find some direct question from our syllabus और हम जाय पढैबू हम नोट्स रो तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलिबो and there will be some question which is connected with us. कारण सिलेबस हम जेतल पूरा कवर करछु किछि किछि जिंस मे बी जेमति बजट हमें पढिया ओडिसा बजट भी पढिया बजट को हमें कंप्लीट करिया बट ऑब्वियसली कंप्लीट कला परे भी किछि गोटे टर्म रह जाइछो जोटा हमें कंप्लीट करि परिबा नै बिकॉज़ अगेन वी नीड टू डू द टाइम एंड कॉस्ट एनालिसिस. केते टाइम हमें दबा कथा गोटे 15 क्वेश्चन पे केते टाइम हमें दबा कथा. या तो नै ना पूरा बसिक हमें पीएचडी करिवा सेम हम करि परिबानी. बट जहां भी क्वेश्चन आसीबो there will be some direct question, there will be some indirect question. आ जोटा आउट ऑफ बॉक्स सेटा आउट ऑफ बॉक्स सेटा समस्त पे आउट ऑफ बॉक्स माने आउट ऑफ सिलेबस जोटा माने तम लागु कि मु पढ नै तो केही भी पढ नांती. I will ensure that thing. Okay, so today is the second class. आउ 15 टा कोन क्लास लागियो 15-16 टा क्लास we will complete it. right? नेक्स्ट क्लास में पढिबा जो क्वेश्चन अछि. ओके इकोनॉमिक ये अछि तापर हमर लैंड रिफॉर्म अछि तापर मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्ट क्वेश्चन आस्थिला ये सब अछि. ओके इफ यू आर इंटरेस्टेड join the class and give this as your best attempt. Right? Thank you for watching. Thank you.